वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बस मैं जानता हूं कि आप एनएफटीज के बारे में दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि एनएफटीज के बारे में इतना कंटेंट बन रहा है पूरी दुनिया में। और मैं भी आजकल एनएफटीज के बारे में बहुत बात करता हूं। पर्सनली बोलूं तो मैं एनएफटीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूं, क्योंकि मैं मेरी ये 110% कन्विक्शन है कि गोइंग फॉरवर्ड एनएफटीज आर गोइंग टू बी ह्यूज, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस बट इन टर्म्स ऑफ देयर मास अडॉप्शन एज वेल। ठीक है। और अभी आप देख रहे हो कि मासेस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जो प्रोफाइल पिक्चर वाली जो एनएफटीज होती है ना, जिसको जैसे कि आप बोर्ड ऐप यार्ड की सक्सेस को देखा, आपने कूल कैट्स को देखा, आपने डेड फेलर्स को देखा, क्रिप्टो पंक्स को देखा। तो इस स्पेस में नो डाउट कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि जो प्रोफाइल पिक्चर्स है, एक फोमो हो रहा है लोगों को। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बहुत अलग अलग तरीके की कैटेगरीज में एनएफटीज जो है वो पॉपुलर होंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि बहुत फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि काफी सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं और ऐसे क्लब्स होंगे जहां पे एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आपके पास उस क्लब हाउस की एनएफटी होगी। आप बैग भर के भी वहां पे डॉलर्स ले जाओगे ना और उनके दरवाजे पे पटक दोगे कि मुझे को अंदर जाने दो, वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले आप इसकी एनएफटी लेके आओ। तो आपको उस क्लब हाउस के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको एनएफटी चाहिए होगी। आज के डेट में वो एनएफटी जैसे काफी सारे रेस्टोरेंट, काफी सारे ऐसे क्लब हाउसेस ने शुरू कर दिए। गोइंग फॉरवर्ड आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग डोमेन्स में एनएफटीज आएंगी। मैं जानता हूं कि आज काफी सारे लोग फोमो कर रहे हैं और वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या बाय करना है, फिर भी वो बाय करे चले जा रहे हैं। जब मेरे से कोई पूछता है कि सर आपने क्या करा, मैं सच बताऊं, मैंने हाथ जलाए। जब तक आप हाथ नहीं जलाओगे आप नुकसान नहीं सोगे। आप, मेरा ये मानना है, आप उस चीज को सीख नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इसीलिए एनएफटीज के अंदर जब मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, तो मैंने काफी सारा कूड़ा करकट भी खरीदा। कूड़ा करकट, यू अंडरस्टैंड। जब मुझे लगा कि यार ये बढ़ेगा, फोमो हो रहा है, इसको बाय कर लेता हूँ, आज मैं नुकसान में हूँ। लेकिन कुछ एनएफटी मुझे काफी अच्छी रही और उन्होंने मुझे रिटर्न भी दिया जनरली। लेकिन मैं अगर बोलूं तो मेरा 60% मैंने हाथ जलाए अभी तक और 40% में सक्सेसफुल रहा हूं। लेकिन हर अटेम्प्ट में मैं कुछ सीख रहा हूं। एक चीज मैंने और सीखी कि जो फ्यूचर मुझे जो दिख रहा है, मैं स्पोर्ट्स लवर हूं। अगर आपने मेरी कंपनी का नाम भी सुना हो, मेरे चैनल का नाम बिट इनिंग है। उसमें मैं लोगों के अंदर क्रिकेटर है, बैटिंग कर रहा है। तो मैं बचपन से, मतलब होता है ना स्पोर्ट्स में, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद रहा। मैं क्रिकेट देखता हूँ, खेलता हूँ, समझता हूँ, क्रिकेट की जानकारी है। और इसीलिए जब मैं क्रिकेट के अराउंड में था, तो मैं जब उसकी एनएफटीज को सर्च कर रहा था, तो मुझे मुलाकात हुई मेरी अथर्व से, राइट। तो वाइल आई वाज सर्चिंग ऑन ट्विटर, और अथर्व और मेरी फिर एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू बातचीत शुरू हुई। और अथर्व को मैंने समझा, यार अथर्व, व्हाट आर यू ट्राइंग टू बिल्ड। तो अथर्व ने मुझे जब बताया कि व्हाट इज बिल्डिंग, तो आई वाज लाइक, यार ये तो फ्यूचर होने वाला है। फ्यूचर एक्चुअली क्यों होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर में आप जैसे कि रियल वर्ल्ड में स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, फुटबॉल क्रिकेट को पसंद करते हैं, गोइंग फॉरवर्ड आप जो स्पोर्ट्स फर्टिनिटी है, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जो स्पोर्ट्समैन है, जो स्पोर्ट्स सेलेब्स है, आप इनकी एनएफटीज भी बाय करोगे फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि जब आप किसी स्पोर्ट्स मैन को लाइक करते हो, या आपकी कोई फेवरेट क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, टेनिस प्लेयर है, आप उसकी कैप लगा के घूमते हैं, आप उसकी टी शर्ट पहनते हैं, आप उसका बैग पे आपका उसका स्टिकर होता है, आप उसके पोस्टर्स लगाते थे। फ्यूचर में आप अपने जो स्पोर्ट्स सेलेब्स होंगे, स्पोर्ट्समैन होंगे, उनकी एनएफटीज को बाय करोगे और यू विल शो इट टू द वर्ल्ड कि आपके पास एक्सक्लूसिव एनएफटी है, या एक्सक्लूसिव आपके पास जो एनएफटी युवराज सिंह की है, या सचिन की है, या धोनी की है, और किसी भाईचुंग भूटिया की है। तो स्पोर्ट्स के अंदर जो सबसे बड़ी जो सेगमेंट आगे आने वाले समय में होगा, वो स्पोर्ट्स के अंदर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइसेंस होंगी। तो लाइसेंस्ड एनएफटीज जो है आर गोइंग टू बी दी बिगेस्ट बिगेस्ट कैटेगरी इन एनएफटी, राइट। क्यों? दो रीजन से। एक आम आदमी को ये नहीं पता होगा, वो इतना टाइम नहीं लगाएगा रिसर्च करने में कि उसको कौन सी एनएफटी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। उसको सिक्योरिटी चाहिए। उसको ये पता रहना चाहिए कि जो कोई चीज खरीद रहा है, वो चीज की बैकिंग है, वो चीज फुल प्रूफ है कि नहीं, उसका कोई ओनरशिप का इशू तो नहीं आएगा। इसीलिए लोग लाइसेंस्ड एनएफटीज की तरफ जाएंगे। और स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी आदमी, कोई सेलिब्रिटी भी होगा, तो अपनी लाइसेंस्ड एनएफटी ही देगा।
इस प्रॉब्लम को अथर्व ने बहुत जल्दी रियलाइज किया, और अथर्व के साथ साथ जो उसकी टीम है, जो इसमें को फाउंडर्स हैं एनएफटी लैब में, इन्होंने इसको बहुत अर्ली स्टेजेस में फिगर आउट कर लिया। और आज की डेट में एनएफटी लैब्स जो है, वो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का ही नहीं बट दुनिया में इस टाइम स्पोर्ट्स लाइसेंस्ड स्पोर्ट्स एनएफटीज में सबसे आगे है इस टाइम। और इन्होंने इंडिया में ये प्रूव करके दिखाया कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा 83 मूवी आई थी, 83 मूवी, और हम जानते हैं 1983 के वर्ल्ड कप का कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा मेरा 1983 का, और मैंने उसमें अथर्व और सोशल स्वैग के बारे में बात करी, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। लेकिन आप सोचो, रिलायंस ने 1983 की जो मूवी थी उसको प्रोड्यूस किया था। रिलायंस प्रोडक्शंस को अथर्व और एनएफटी लैब्स ने कन्विंस किया, और जो 83 मूवी की जो एनएफटीज हैं वो सोशल स्वैग के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च करी। तो सोशल स्वैग और एनएफटी लैब्स ने मिलके 83 की मूवी की जो एनएफटीज है वो लॉन्च करी, और वो एनएफटीज काफी पॉपुलर रही। सोशल स्वैग बाय द वे अक्षय कुमार बैग्ड, एक कंपनी है, अक्षय कुमार और राणा दगुबती, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी एनएफटी लैब्स जो है वो स्पोर्ट्स एनएफटीज में, लाइसेंस्ड एनएफटीज में काम कर रहा है। और आगे आने वाली चीजें क्या है, क्या डेवलपमेंट्स है, और एक बहुत ही जो दुनिया की सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स टेक मीट हो रही, ग्लोबल स्पोर्ट्स टेक समिट हो रहा है, जिसके अंदर दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड शामिल हो रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। एनएफटी लैब्स का कोई टोकन है या नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसका यूज केस है कि नहीं वो बात करेंगे, रोड मैप के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एनएफटीज के अंदर इंटरेस्टेड है, एनएफटीज बाय करना चाहते हैं, परेशान है कि कौन सी एनएफटी लूं या नहीं लूं, ये आपको एंड तक देखना चाहिए इंटरव्यू। और अगर लंबा लगे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, मतलब, लेकिन देखना जरूर, रात को हेडफोन लगा के देख लेना, लेकिन देखना जरूर, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। तो वेलकम अथर, सॉरी इंट्रोडक्शन लेट हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये इंट्रोडक्शन जरूरी था बिकॉज लोगों को ये पता होना जरूरी है कि एनएफटी स्पेस में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने का ही मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी पहले अपने बारे में बताओ, अपने को-फाउंडर्स के बारे में बताओ, और फिर तुम्हें क्या लगता है कि एनएफटी स्पेस में कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको तुम सॉल्व करना चाह रहे हो और जो कर रहे हो इस वक्त। राइट। तो बेसिकली थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। आपने बहुत ही अच्छे से उसका कंटेक्स्ट सेटिंग जो है वो किया हुआ है। सो व्हाट आई विल डू ना, पहले तो मैं बताऊंगा कि हम लोग कौन है एग्जैक्टली जो फिलहाल में इन्वॉल्व है ना। एंड बेसिकली वी आर ए टीम ऑफ 4 को फाउंडर्स। तो मैं और तीन और मेरे दोस्त हैं। एंड वन एंड आवर आई थिंक आवर कोर स्ट्रेंथ ना, मतलब हमने जब अपना फंड रेजिंग शुरू किया, जब पूरा एडिशन फेज पे थे, तब सबसे भी रियलाइज्ड वेरी अर्ली ऑन कि हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है वो प्रोडक्ट वगैरह नहीं, वो एक्चुअली टीम है। बिकॉज द टीम हैज what we call domain expertise plus the ability to do sales. Because अगर आप कुछ बनाते हो लेकिन बेच नहीं पाते हो तो बनाने का मतलब ही नहीं हुआ. So in that context, we have a team of 4 co-founders and currently about 11 employees and 6 interns. So it's a total team of about 21 people now and growing almost month on month. But जो हमारे 4 co-founders है, I'll start with our CTO, Ayan Wali. तो अयान वाली जो है ना, he was actually my classmate in the US. We were both studying together at a university called Rochester Institute of Technology. तो RIT बोलते हैं उसको in short. RIT में I had gone on a merit scholarship, but जो अयान आया था वहाँ पे, he had come for the software engineering program. And RIT का जो software engineering program है, it is ranked I think 6th or 5th in the whole of North America. It's a very strong program from that university. And जो अयान का पूरा education था RIT में, it was sponsored by a Kazakhstan government's presidential merit scholarship. तो अभी आई थिंक अभी भी उनका प्रोग्राम होता है कि एवरी ईयर दे पिक लाइक बिटवीन 25 एंड 40 वेरी हाई अचीविंग स्टूडेंट्स इन देयर कंट्री एंड दे सेंड देम टू एनी कॉलेज ऑफ देयर चॉइस अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी हो। एंड आपका जो भी उधर खर्चा आता है, the government of Kazakhstan pays for it. The only condition is after your education is done, you have to come back and work in Kazakhstan for a minimum period of 5 years. So Ayan was actually in that pool of people who got selected from the entire country of Kazakhstan to go to the US.
तो वैसे हमारे यहाँ बात में मुलाकात हुई. दिस वाज आई थिंक बैक इन 2011. तो 2013-14 में हम दोनों का ग्रेजुएशन हो गया. एंड देन Ayan went back to Kazakhstan. He became the head of IT for a cigarette company called Philip Morris. Then he joined another company called Japanese Tobacco, which was another tobacco making company. And then he joined a startup called Fresh Up, जो हमारा भी इंडिया में एक ऐप बना था, माई दुकान नाम का. It did very very well. So that was the European version of my dukan, Fresh Up, and it got acquired by a much larger American company for I think a few hundred million. तो ये जब acquisition हुआ ना, then suddenly क्या हो गया कि Ayan was used to the startup culture, but he again went back. So he left big cigarette companies to go to a startup. But the startup got acquired by a large company. So he was again in the large company atmosphere, and he was not feeling very comfortable with it. So when the idea of NFT Labs came, I knew that somewhere Ayan is also thinking of switching his careers. So I was able to push him, convince him कि तू मेरे साथ आ जा, अभी कुछ और job मत कर. So that is Ayan. He's my co-founder. He's been there since day one, and he's also the CTO. Apart from Ayan, we have Nikhil Mohan. Nikhil basically stays in Trivandrum. तो उसका क्या बैकग्राउंड है ना कि इथेरियम जो है, एज द इथेरियम फाउंडेशन, द इथेरियम ब्लॉकचेन करीबन 7 साल पुराना फाउंडेशन है. निखिल और उसकी टीम started building solidity language के ऊपर smart contracts for Ethereum for 6 years. मतलब from the whole of India, Nikhil and his team were one of the very early developers who to contribute to both the core Ethereum foundation as well as to other companies who were trying to build on Solidity. तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है ब्लॉकचेन के जिनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, टेक डेवलपमेंट जो है वो निखिल ने किया हुआ है, या फिर निखिल हैज ओवरसीन दैट डेवलपमेंट. So Nikhil ने क्या किया है कि he spent the last 6 years helping many blockchain companies come up and build on Ethereum, and he's a very strong believer in Ethereum. But he had never launched something of his own in the Web3 domain. But because I knew that Nikhil is very talented, uh, we were lucky that we were able to convince him to join with us as a co-founder. So that is Ayan and Nikhil, and the third person we have is Ujwal Ujwal Sutaria. उज्जवल सुतारिया जो है, ही इज करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली एनसीआर. उज्जवल का बैकग्राउंड क्या है कि ही वाज अ इंजीनियर. उसके बाद ही वेंट टू आईआईएम अहमदाबाद, डिड हिज पीजीडीएम इन फाइनेंस. आईआईएम अहमदाबाद में पीजीडीएम करने के बाद उज्जवल हैड एक्चुअली लॉन्च्ड अ स्पोर्ट्स टेक company right after his IIM graduation with a couple of other co-founders. That company was called Athleto. तो अब यू कैन दे स्टिल हैव अ गूगल प्रेजेंस वगैरह, बहुत उनके बारे में लिख के आया था उस टाइम पे. सो जो बुक माई शो है ना, वेयर यू कैन बुक टिकट्स, एथलीटो वाज अ बुक माई शो बट फॉर बुकिंग स्पोर्ट्स वेन्यूज. सपोज यू वांट टू प्ले सॉकर विद योर फ्रेंड्स, यू कुड बुक अ सॉकर कोर्ट नियर बाय ऑनलाइन, and that is what Athleto was doing. So Ujwal had launched that, and तो then I think some अथलीटो अभी भी है, अथलीटो अभी भी ऐप है. अभी भी ऐप है, but Ujwal is not a part of it now. Okay. Yeah, but Athlito, what he had launched in the Athlito of today are not similar, very very different. So that is how his journey began with both startups and with the sports domain. So उसके बाद क्या हुआ कि after he exited from Athlito, he actually joined as a venture capitalist in a fund called Innoven Capital, which is a very famous VC fund out of Mumbai. They have office at First Towers and such. So Innoven Capital जो है वहाँ पे Ujwal became an associate director in a short I think 2.5-3 years span of time. And somewhere I think in 2020 I had joined a program called Sparklehood. So Sparklehood जो है, they are currently running this sparklehood.com. So it is a program which basically connects aspiring entrepreneurs with the right mentors, advisors, coaches. So I had joined Sparklehood for an NFT Labs, and Sparklehood actually put me in touch with Ujwal. And then while Ujwal had initially joined us as an advisor, I think somewhere we had a very good rapport, and we were able to take the relationship much beyond advisory to bring him as part of the core team itself. So that is Ujwal. And then there is me. So I stay in Pune, but my entire journey actually began in technology space itself. After I finished my graduation in the US,
I worked, so I studied finance and economics. मैंने वहाँ पे डबल मेजर किया था, दोनों डिग्रीज एक साथ. उसके बाद क्या हो गया कि I had done that major thinking कि I will work in Wall Street kind of profiles, investment banking, private equity, and so on. And I actually got a job to do that. I worked in a private equity firm first in Miami. It was a private equity firm which dealt with real estate. लिब्रा कैपिटल नाम था उसका. तो मैंने वहां से अपना करियर शुरू किया. देन आई वेंट टू शंघाई, वर्क विद अनदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी व्हिच वाज डूइंग क्रॉस बॉर्डर mergers and acquisitions. uh, but I think somewhere very early in my career I was fortunate. तो मेरे को realize हुआ कि, and this was not something out of so I'm not trying to like put down the profession or anything, but I realized very early on that Excel modeling day in day out is not what I wanted to do for the rest of my life. Not even for the next 5 to 10 years. So I thought that because I'm still new in this field, it is better I quit now and like try something else than having some remorse or regret or resentment later. So with that thought, I had come back to India with no clear plan ki karna kya hai. But I knew that I will start something unique and in the tech space of my own, vagara, very vague ideas I had in mind. And with that, I came back to India and convinced one of my classmates from RIT to join me in a venture called Fractal Media. So Fractal Media जो है, even we got a lot of press coverage at that time, but the unique part about that ना is that अभी आप लोग जो घूमते हो ना ओला कैब्स में वगैरह, तो ओला कैब्स में you might see those tablets behind the driver seat or the passenger seat. Those are the infotainment systems. We actually made those, and we had scaled those in about 400-500 cabs at the time. And the idea was to jointly do it with one of these aggregators. That time we were talking to Meru, Uber, Ola, all the players. But I think so somewhere there was a difference in strategy, that these aggregators wanted to maintain a private cab experience, whereas what we had built was a advertising driven system, because there was no other way for us to make money from it except to show ads. But क्या होता था कि because of ads ना, the experience became too commercialized. So they decided not to go ahead with us, and they launched their own. But we got absorbed in this entire process. So that was my first startup. A very quick journey of about 2.5 years. उसके बाद I tried my hand in a couple of more things, and then I actually helped two other founders build their business. My most recent one was with a management consulting and AI company. तो यहाँ पे क्या क्या हो गया कि in all of this journey ना, somewhere in the back of my mind, I knew that I will go back and do something of my own in the tech space, but that clarity was not there about what, when, how. Somewhere in 2019, towards the end of it, the clarity came that this will be something in the NFT space. And even before I had an idea, I was lucky that I got a team in place. Because क्या था कि I knew कि अगर हम कुछ करना है in Web3 NFTs, we will need a very solid tech guy. We will need a solid blockchain guy. We will also need somebody who has a commercializing experience, which is Ujjwal. And I was able to get all these pillars of NFT Labs in place before, and then together we have built out the idea. So that's like a very quick overview about our team. Atharva, you said that you got the idea of getting into NFTs in late 2019. So, I mean, 2019 was way too early for NFTs. So, how you got introduced to NFTs? Like, I mean, when was the first time uh, it got struck in your mind that okay, NFT में करना है, यार NFT is going to be the future? What made you think at that point of time? Because in 2019, I don't know if many people were believing NFTs to be mainstream. Correct. So यहाँ पे क्या actually 2-3 things happened, right? One of the things which happened is that I think 2014 या 15 में there is a person called Anil Das. He had given a presentation at a conference called, I think, SXSW. SXSW. It's a very, very big tech conference about this whole concept of digitized graphics. And now looking back, it is very obvious that what he meant is NFTs itself. But at time, nobody called it an NFT. It was called as digitized graphics. But that क्या हुआ कि उसने वो presentation दिया, the whole community appreciated that this is a unique concept, but no one did anything about it. 2017 में CryptoKitties got launched and got some initial publicity, and that is when I actually revisited the whole NFT landscape. But apart from that, what happened is that Y Combinator जो है ना acceleration program. So Y Combinator has a startup school. So it's like a
3-month program where and anybody can join it and participate. And I highly recommend this to everybody who wants to become a founder at any point in life. So I had joined that summer startup school twice, in I think 2018 and 2019. 2019 when I had joined it now, I was going through all the 2019 or 20, I don't remember, one of those 2 years. I think 19 only, 19 ke end mein, I had seen ki one of the startups which Y Combinator had selected was OpenSea. And that time OpenSea na, was just a very like, very basic concept. Ki they were able to create what they called the NFT, and they were able to facilitate a two-way transaction of that NFT. And I had read about OpenSea then in the Y Combinator ka database. I thought that this is very cool वगैरह. And I also liked the fact that OpenSea के जो है ना founders, they were very early in the game. मतलब लोग उन पे हंसे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, like ये कभी नहीं pick up होगा. But what they did, right, they did not get bothered by the macroeconomics at all. They just kept building, and every month OpenSea kept releasing feature के ऊपर feature. कि now we are supporting this wallet, that integration, XYZ. They kept building a high class product, even though there was no much usage to it. So I had thought ki, my very primitive thought, the first thought was that when I studied the OpenSea model, I immediately got the analogy of Uber and Ola. Ki if OpenSea is doing this in the Western markets, surely there will have to be somebody who does it for the Southeast Asian and Indian markets. And I thought, ki, why don't we become that? Why don't we become the Ola of Uber in the NFT marketplace space? And that is how the actual idea of NFT Labs got born. And when I actually first spoke with Ayan, Nikhil, Ujjwal, right, my pitch to all of them was exactly this: that let us build the Desi version of OpenSea. And obviously now today what we're doing is not exactly that. It's much different because the idea has evolved. But that is how it kind of took birth. So, like, this is amazing. I mean, so you were saying that जितने भी आपके co-founders हैं, तो NFT का आइडिया सबसे पहले तुम्हें क्लिक हुआ, और जो वाई कॉम्बिनेटर में तुमने ओपन सी को भी एक पार्टिसिपेंट के रूप में देखा था, जब ओपन सी एक पार्टिसिपेंट था, मतलब आज ओपन सी जो 90% वॉल्यूम लेके बैठा हुआ है एनएफटी स्पेस में, 90 से भी ऊपर ही होगा, और एक वो ओपन सी जो एक वाई कॉम्बिनेटर में, एक वाई कॉम्बिनेटर मतलब जैसे आप एक सीड में होते हो ना, जब स्टार्टअप का आपका एक आइडिया आता है, तो वाई कॉम्बिनेटर आपको असिस्ट करता है, आपको पूरा फैसिलिटेट करता है, फिर आपको इवेंचुअली फंडिंग दिलवा के आपको फाइनली लैंड करवा देता है. बट वाई कॉम्बिनेटर में जाना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत क्राइटेरियाज होते हैं. बट वंस यू आर देयर इन वाई कॉम्बिनेटर, एटलीस्ट आपका स्टार्टअप रनिंग मोड में तो आ ही जाएगा. ठीक है, तो उस लेवल पे ओपन सी को अथर्व ने देखा, फिर अथर्व को वहां से आइडिया क्लिक किया कि एनएफटी स्पेस में कुछ तो बनता है यार. अगर ये ओपन सी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में या उसमें सक्सेसफुल होगा, तो कोई एक एनएफटी स्पेस रीजन स्पेसिफिक और एक एशिया में या इंडिया में भी जरूरत होगी. लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां से जो एक सोच आई, तो मुझे लगता है कि वहीं से फिर ये जो स्पोर्ट्स एनएफटीज का लाइसेंस स्पोर्ट्स एनएफटी का ख्याल कहां से आया. बिकॉज नाउ जो मैं देख रहा हूं अथर्व, तुम एनएफटी के अंदर भी एक निश में हो. सो यू आर इनटू अ निश सेगमेंट. यू आर नॉट केटरिंग टू द एंटायर मार्केट प्लेस. नाउ यू ट्राइंग टू position yourself as a leader in a very niche segment. That segment in itself is going to be $1 billion segment in going ahead. So what is your take on that? From कहां से ये डिसाइड किया कि यार एनएफटी के अंदर भी अपने को इस निश वाले सेगमेंट में काम करना है, और क्यों जरूरत महसूस हुई? I think one of the very जो हमारे एक लकी ब्रेक में मिला ना हमको, इट वाज दैट देयर इज, जैसा वाई कॉम्बिनेटर है ना, वैसे देयर इज वन मोर प्रोग्राम कॉल्ड एंटलर, and their website is antler.co. So Antler is a program which is exactly like Y Combinator. The only difference between Antler and Y Combinator is that Y Combinator क्या करता है कि आपके पास अगर business idea होगा ना, तो they will select you on basis of your idea, team, etc., and they will help you refine and develop the idea. Whereas what Antler does is that they purely take a bet on the founding team. So from day one, na, when I was able to convince Ayan, Ujjwal, Nikhil to come on board, even though it was like
maybe like prudish for me to say it out loud, but I knew in the back of my mind कि we have a strong team, and ये team का कुछ कुछ तो हो पाएगा. So we thought कि why don't we apply to the top tier mentorship and guidance pools that are available globally. And that time we had already begun building the OpenSea version. So we applied to Antler. And Antler, Antler as a program hai that they get like 3-4 thousand applications for every cohort. They pick only 40 or 50 out of those applications. And they pick 40-50 founders. तो एंटलर ने ना हमको क्या बोला कि यार तुम लोगों को हम लोग प्रोग्राम में तो ले लेंगे बिकॉज वी लाइक यू एज अ टीम, बट जो तुम्हारा कंसेप्ट है टू काइंड ऑफ क्रिएट ओपन सी कॉपी, it is not very well thought out, and we need to refine it like significantly. So if you're going to be open minded and flexible enough, only then we will select you. Varna don't waste our time kind of a thing. So I think one of the things which I think we all of us four co-founders are, one of the reasons that we match with each other na is that we are all very open minded. और कोई कुछ हमको बोलता है तुम लोग ये गलत कर रहे हो, तो I think most of us are not, unless we are 100% sure कि we are not incorrect, we are not stubborn to like completely say कि नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, हम जो कर रहे हैं वही correct है. That is not our approach. When Antler made us this offer now, without much debate, we decided कि ठीक है ले लेंगे, because we knew कि जो Antler के पीछे लोग हैं ना, they have built billion-dollar companies. They know what they are talking about, even though their domain might not be NFTs. In general, उनको पता है कि how to make a business, how to build a good company, and so on. So we told Antler कि fine, we'll join the program, and of course we will refine the idea further. So idea refinement में क्या होता है कि one of the very first things which Antler taught all the companies is that every big company that you see today, be it an app like Slack, Uber, PayPal, you pick the company, right? There are 100 other competitors who have tried to go in that company's market from day one and they have failed. Why these companies have succeeded? Because they have started building and serving a very niche audience, and they have done that really well. And when they were sure that one niche is extremely happy with what we have built, only then they opened up their product to the broader audience. For example, if you take the case of Slack, Slack's first customer for 1.5 years was one single company. They built an internal messaging system for only one company, and that was their niche, just one IT firm. But they decided that no matter what happens now, until this company's NPS is like not 90% or above, we know that they are not extremely happy with what we did. We're not going to open the messenger to anybody else. They say Facebook began with Harvard campus. Similar reasons, that it is always safer to have a very small pool of participants first, figure out what mistakes you're making, how you can do something better. And then once you know you have nailed it in that one particular niche, it makes sense to obviously grow fast. So when that clarity came to our mind, sports was a no-brainer because Ujjwal extremely passionate about sports because of Athleto, and he's himself is a sports athlete in multiple types of sports वगैरह. And I also like sports. Nikhil obviously likes it. This हम सब देसी लोग at the end of it. And then even Ayan is a very big soccer fan. So what we thought is that our categories at times were sports, music, movies, a bunch of categories. But we thought कि why don't we take the common sense approach? जो sports है, sports is a social experience. Even in the real world, people go to stadiums in thousands at a time. हम लोग जो घर पे party करते हैं, we watch cricket together as a party. In the US, people have Super Bowl parties. So sports is a social experience, and we thought कि आगे जाके जो OpenSea वाला कर रहा है ना, they're all building communities. So a community needs to be centered around the social experience. So out of all the various niches that were available, sports seemed like the best choice because sports in the offline world is a community-centric event. So it makes sense to keep it community-centric, even in the online and the NFT world. That's how हमने sports से शुरुआत की है हमारी. That's amazing. मतलब तो निश एक NFT स्पेस के अंदर मैंने जैसे बोला ना कि इतनी सारी कैटेगरीज, अथर्व ने और टीम ने पहले सोचा कि ओपन सी की तरह ही कुछ एक मार्केट प्लेस बनाते हैं, लेकिन फिर इनको रियलाइज हुआ कि ओपन सी की कॉपी इतना बड़े स्केल पे कॉपी को क्रिएट करना और उसके अंदर एक निश को क्रिएट करना और उसको सक्सेसफुली करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स एनएफटीज जो है वो
बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है, और उसी के अंदर जो अभी तो मेरे को लगता है शुरुआत भी नहीं हुई है एनएफटी स्पेस में, और स्पोर्ट्स एनएफटीज की भी अभी शुरुआत नहीं है। तो अथर, मेरा इंपॉर्टेंट जो अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स एनएफटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी होने वाली है फ्यूचर में, और इट्स माइंड को क्या लगता है कि क्या पोटेंशियल है स्पोर्ट्स एनएफटीज का, और स्पोर्ट्स एनएफटीज क्यों बहुत बड़ा एक अगर एनएफटी स्पेस में जितने भी हम एनएफटीज में देख रहे हैं आते हुए, अभी स्पोर्ट्स एनएफटीज क्यों शुरू भी नहीं हुई और कितना बड़ा तुम्हें पोटेंशियल लग रहा है, और अगर मुझे स्पोर्ट्स एनएफटीज के बारे में बताओ, और उसमें भी जो लाइसेंस्ड स्पोर्ट्स एनएफटीज है। सो लेट्स टेक दी एक एग्जांपल ऑफ सबसे बड़ी कंपनी इन दिस स्पेस, डैपर लैब्स। तो डैपर लैब्स का जो मार्केट प्लेस है, एनबीए टॉप शॉट, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग बास्केटबॉल का जो वीडियो क्लिप रहता है ना, मोमेंट ऑफ बास्केटबॉल हिस्ट्री, दे आर सेलिंग दोज मोमेंट्स इन वीडियो फॉर्मेट एज एनएफटीज। ये बेच बेच के 2020-21 का जो साल था ना, देयर रेवेन्यू वाज $740 million, लगभग 5-5.5 हजार करोड़। वो वीडियोस बेच के, यस, वो एनबीए टॉप शॉट छोटे रेवेन्यू इज या वो $740 million। छोटे छोटे वीडियोस बेच के कितना रेवेन्यू बताया तुमने? 740 million डॉलर। सो बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट इट ना, दे हैव, उन्होंने क्या किया है कि ट्रेडिंग कार्ड का फॉर्मेट बना दिया। खाली दिखने के लिए तो कार्ड दिखता है, बट उसके अंदर हमको क्या मिलता है, एक्चुअली वीडियो। एंड दे हैव पैक्ड ऑल दीज कार्ड्स टू गेदर, ताकि कुछ लोगों को अच्छे वीडियोस मिले, कुछ लोगों को खराब वीडियोस मिले। तो बेसिकली दिस होल कंसेप्ट ना इज कॉल्ड नीडल इन द haystack। तो द नीडल इज अच्छे अच्छे वीडियोस। फॉर एग्जांपल कोई अगर लेब्रॉन जेम्स का डंक हो गया, तो दैट वीडियो हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू, दैट्स आवर नीडल। बट व्हाट एनबीए टॉप शॉट इज क्रिएटिंग, दे आर क्रिएटिंग द हे। वो लोग उसमें बहुत कचरे वीडियोस भी घुसा रहे हैं, सो दैट दे कैन क्रिएट पैक्स, एंड देन पीपल कैन बाय दीज पैक्स इन द होप दैट ये हम लोग पैक खरीदेंगे, इसमें हमको 3-4 कार्ड्स मिलेंगे, which will be 3-4 different videos. Out of these 3-4 videos, maybe one might be valuable, or if you buy 10 packs, you might get one video that is of value. This is a gamified version of trading cards in the video format, जो बेच के they made a $740 million revenue. Now the surprising fact is 5,000 crores na is an impressive number by any account, right? But तो if 5,000 you, करोड़ एक एनबीए ने बनाया, एनबीए जो yeah, NBA top shot. जैसे जैसे मैं कहता हूँ बीसीसीआई है जैसे क्रिकेट को जो यहाँ मैनेज करता है, तो वहां की जो बास्केटबॉल एसोसिएशन को का जो कमेटी है, जो वहां की जो बास्केटबॉल को मैनेज करती है यूएस में, उसने 5,500 करोड़ बना चुकी है वो एनएफटी स्पेस में। Correct. Already बना चुके हैं। Yes. मैं जस्ट That, इसकी कल्पना इस तरीके से कर रहा हूं उधर, कि सपोज करो कल को बीसीसीआई एनएफटी में आ जाए, तो मैं ये सोच रहा हूं कि बास्केटबॉल अगर 5,500 करोड़ बना सकती है, बीसीसीआई कितना बना सकता है? मुझे लगता है जितना बीसीसीआई आईपीएल से बना रहा है, उसके बराबर का पैसा ही वो एनएफटी से बना सकता है, मुझे ऐसा लगा, अभी सोच के ऐसा लग रहा है। करेक्ट। So there is a potential is enormous, but क्या क्या होता है ना, कि हमको ऐसा लगता है कि 740 million is like a very high number ना, but the way Dapper Labs looks at it is that this is just day zero. And why? Because जो पूरा एनबीए है ना, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन का पूरा रेवेन्यू जो है, दैट इज अराउंड $8.5 billion 7 साल का। So this 740 million na is not even 9% of their revenue. Whereas Dapper Labs का जो अभी recent fundraising हुआ, in their internal documents, the expectation is that total NBA's earnings from Top Shot and NFTs will get close to 20% of their revenue. जो माय अभी गॉड। 700 मिलियन है, वो खाली 8% है। अगर वो हमको 20% लेके जाना है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर $1.6 billion, ओवर 12, ओवर 10,500 करोड़ इजीली। मैं ऑडियंस को यही बताना चाह रहा हूं कि आप ये नंबर्स देख रहे हैं, ये नंबर्स बेसिकली अभी एक स्पोर्ट्स फेडरेशन एनबीए, अभी सिर्फ ये उसका नंबर है जो कि बहुत अग्रेसिव है, बहुत आगे निकल चुका है एनएफटीज में। बट जो नंबर्स एनबीए कर रहा है, क्या इसको बीसीसीआई नहीं देख रहा होगा? क्या उनकी स्ट्रैटेजिक टीम नहीं होती है? क्या इसको दुनिया भर की जो फुटबॉल फेडरेशन है वो नहीं देख रहे? क्या इसको फॉर्मूला वन का फेडरेशन नहीं देख रहा है? क्या इसको टेनिस के जितने भी प्लेयर्स हैं वो नहीं देख रहे? क्या विंबलडन
यूएस ओपन अपनी अपनी एनएफटीज लेके नहीं आएंगे, अपने टूर्नामेंट के स्पेशल मूवमेंट लेके नहीं आएंगे, राइट? क्या जो पीट सैम्प्रास और उनके जो वो पुराने जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास जो ट्रॉफीज हैं, जो मूवमेंट्स हैं, क्या वो नहीं देख रहे हैं कि हम प्लेयर्स तो रिटायर हो चुके हैं, क्या हम अपनी रिटायरमेंट के बाद भी जो हमारे पास मेमोरीज हैं, क्या उनको सेल करके आज भी हम पैसे बना सकते हैं? क्या सचिन तेंदुलकर बना सकता है उतने ही पैसे जितना वो खेल के बनाता था? एनएफटीज वो पोटेंशियल देता है, और इसीलिए इट्स माइंड को ऐसा लगता है इस स्पेस के अंदर कि जो स्पोर्ट्स के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतना इतना मैसिव, मतलब अभी तो मैं ये कहता हूं कि शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ एनबीए है जिसने इसको सीरियस नोट पे इस लेवल तक रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन 2022 जो है वो स्पोर्ट्स एनएफटीज का साल होगा। अगर हमने 2021 में बोर्ड ऐप यार्ड, हमने कूल कैट्स और हमने इनका साल देखा, मैं ये नहीं कहता उनका आगे भी रहेगा, लेकिन अब आप जो देखोगे 2022 में जो नेक्स्ट वेव है वो स्पोर्ट्स एनएफटीज की वेव होगी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स एनएफटीज इसलिए भी ग्रो नहीं कर पाई है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, क्योंकि कई देशों में रेगुलेशन की क्लैरिटी नहीं है। आप इमेजिन करो, जैसे ही रेगुलेटरी की क्लैरिटी आ गई, जो कि बाय द वे अब सब जगह ऑलमोस्ट आ गई है, आप इमेजिन करो जरा इस स्पेस के अंदर वॉल्यूम। और एक और चीज बताऊं आपको, रेगुलेटरी की क्लैरिटी सिर्फ उस हद तक ही तो नहीं है कि आप इथेरियम से नहीं ले सकते, लेकिन एनएफटी लैब्स जो अथर्व मेरे सामने बैठे हैं इस टाइम, खास बात यह है कि इनकी मार्केट प्लेस पे एनएफटीज आप फियाट में भी बाय कर पाओगे। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से लेना है, यूपीआई से लेना है, मैंने पीछे देखा अभी, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो अब मैं ये बात करना चाहूंगा अथर्व के एनएफटी लैब्स किस प्रॉब्लम को हमने ये भी समझ लिया, हमने पोटेंशियल भी समझ लिया, तो व्हाट इज दैट डिफरेंट, आप ऐसा क्या कर रहे हो डिफरेंटली कि जो दैट इज गोइंग टू बी, यू थिंक के दिस इज रियली गोइंग टू चेंज द वे स्पोर्ट्स एनएफटीज जो फ्यूचर में डील की जाएंगी, जिस तरीके से लोग इंटरेक्ट करेंगे, तो एनएफटी लैब ऐसा क्या करने जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस लेके आएगा वो? So क्या क्या है ना कश्यप की so there are three more foundations which have kind of gotten us to what we are doing today. हम हमारी शुरुआत हुई एंटलर से, जहाँ पे वी फिगर्ड आउट कि हमको निश में फोकस करना है. वी picked sports to become that niche. Then we got into another acceleration program called Long Hash Filecoin Frontier Accelerator. तो ये जो है ना, this is basically a collaboration between Long Hash Ventures, which is a Singapore-based VC fund, a very popular VC fund in the crypto space. They're as good as Sequoia or Andreessen Horowitz in their domain. They have done a collaboration with Filecoin itself, जो कि सबसे बड़ा NFT storage का प्रोटोकॉल है. They have created IPFS and all of this. So ये दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, and they got about I think 450 applications for that program. They picked 5 companies. Luckily we were part of that 5 who got picked, because by that time we already had some backing by Antler वगैरह, so it became a bit of a easier path for us to get into this program as well. यहाँ पे आने के बाद हमको क्या पता चला ना, कि ये जो हमको मिला है एपिफनी या फिर रियलाइजेशन, इट इज नॉट यूनिक, बिकॉज लॉन्ग हैश इज इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सो दे नो कि लोग क्या बिजनेस में काम कर रहे हैं. तो उन्होंने उनको क्या बताया कि तुम लोग जो ये बोल रहे हो स्पोर्ट्स एनएफटी मार्केट प्लेस, देर आर अराउंड लाइक 25-30 कंपनीज which long hash knows which is doing the same thing, which also have good teams वगैरह. So they challenged us to rise to the next level. उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने भी जो किया दैट इज स्टिल डे जीरो. यू हैव गॉन फ्रॉम माइनस टू जीरो, नाउ यू हैव टू कम टू वन, to plus one. So for that, you need to differentiate further within the niche that you have chosen. So we began with NFT as a niche, then we went to sports as a sub niche, and then they challenged us to even innovate further in that niche to do something differently. That is when we actually figured out that the problem which is there in the market now is that आज के जमाने में OpenSea, by the way, has like some 85% of the market share. जो भी trading होता है NFT का 85% is happening on their own platform. But what happens is platforms like OpenSea, Mintable, Rarible, all of these companies, यहाँ पे people are going and doing trading, primary sale, secondary sale. But जो NFT के around चर्चा होती है, discussion, gossiping, bragging, complaining,
all of this happens in disconnected sub communities, like alag alag Discord servers, alag alag Telegram groups, alag alag WhatsApp groups, Telegram channels, Instagram groups, and so on. So for the same NFT asset na, एक जगह पे we have trading platforms like OpenSea, एक जगह पे we have like 10-20 other platforms which are social platforms, which is where people are talking about these NFTs. So there is a disconnect between where people are buying and selling and where people are having conversations. So we thought that why don't we make our first product, which is ITSMYNE, a social marketplace. तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल यूएस में देयर इज अ कंपनी कॉल्ड eToro, which is now worth some 3.5 or 4 billion dollars in valuation. eToro जो है ना, they are a social stocks के लिए market. मतलब suppose you are a stock trader, you might have some knowledge or insights which your peer community has no idea about, but you can put your knowledge out there and people can follow you, they can contribute in the conversation. We are applying the same concept to NFTs. People, so the sports company which will tie up with us will come and list the NFTs, but you, me, everybody else who we know can come and engage in both fruitful as well as some not non-fruitful but fun conversation around these NFTs. So basically, we are combining what NBA Top Shot has done with what Reddit is doing for a very long time. Matlab, NBA Top Shot has made it easy to consume NFTs. You don't need to have any blockchain knowledge. You can just go and buy an NFT in NBA Top Shot. But on Reddit, you can engage with all types of gossip conversation. And at ITSMYNE, we are building a hybrid of NBA Top Shot and Reddit. People can come and trade. They can also engage in social conversation. And that is the problem which we are seeking to solve. That's amazing. That's amazing. So basically what you're just trying to say is, मैं समझ गया कि आपकी मार्केट प्लेस इसलिए डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आपकी मार्केट प्लेस सिर्फ मार्केट प्लेस नहीं होगी। जैसे कि आज अगर मैं ओपन सी पे जाऊं तो ओपन सी पे वो एक प्योर मार्केट प्लेस है, मुझे वहां एक सोशल एंगल नहीं दिखता। सोशल एंगल का मतलब, अगर मैं चाहूं, मैं एक नया बंदा हूं या मैं रिसर्च कर रहा हूं कि मुझे कौन सी एनएफटी बाय करनी है, मुझे वहां कोई चीज मैं फॉलो नहीं कर सकता या किसी चीज को मुझे ये नहीं पता लग रहा कि जो लोग यहाँ सक्सेसफुल हैं या ओजीज हैं, जो पुराने लोग हैं, द पीपल हु आर सक्सेसफुल, अगर वो यहाँ पे डिस्कशन फोरम हो या किसी तरीके की बात चल रही हो, कुछ फोरम्स हो, किसी पर्टिकुलर एनएफटी पे कुछ बात चल रही है, द पर्सन जो कि सक्सेसफुल हो, जिसके पास उसकी एनएफटी कलेक्शंस अगर विजिबल हो जाए, दिख जाए, तो मैं उसको फॉलो करूंगा। जैसे मैं सोशल मीडिया में ट्विटर पे सक्सेसफुल लोगों को या जो सक्सेसफुल जिनके कमेंट्स अच्छे लगते हैं या जिनका एक प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, जिनकी बात अच्छी लगती है, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके विचारों को फॉलो करता हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं एनएफटी लैब्स की अगर उस पे जाता हूँ मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ एनएफटीज तो हैं ही लिस्टेड। अब मुझे अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी एनएफटी लेनी है, तो मैं वहाँ सोशल एंगल जो है वहाँ सोशली लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ, उन्हें फॉलो कर सकता हूँ और फिगर आउट कर सकता हूँ कि कौन सी एनएफटी मुझे बाय करनी चाहिए by just listening to the conversation that is happening, by connecting with the right people, by following the right people, by figuring out what others are doing who are doing it successfully, right? जैसे सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि अच्छा यार ये सक्सेसफुल लोग हैं, चलो देखते हैं कि यार what they are doing. Is that what you're saying? Very very close. So this, like, I think to simplify it even further ना, हम लोग जो अभी हेडफोन पहनते हैं ना, one of the most recent successes, which is the guy who's come on Shark Tank as well, Aman, उसका कंपनी है बोट। तो बोट ने क्या खुद को डिफरेंशिएट किया कि when they launched on Amazon, right, they paid a lot of attention to having positive Amazon reviews because people make a lot of decisions based on the reviews alone. So we are actually simplifying that for NFTs. At one point क्या हो जाएगा कि because इतनी सारी बातचीत हो रही है ना, you will have something similar to an Amazon review system for NFTs. समझ गया जी, समझ गया। ये आंसर देके आपने सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब मैं अमेजोन पे, मेरे पे इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी ना किसी पॉइंट पे जाके सपोज आपका बजट फिक्स्ड होता है कि मुझे 5,000 रुपए में या एक चीज खरीदनी है। अब अगर मुझे 5,000 रुपए में वहां पे 10 आइटम लिस्टेड होती हैं, मैं जनरली उस आइटम के साथ जाता हूं जिसका रिव्यू अच्छा होता है, जिसकी रेटिंग्स अच्छी होती है, क्योंकि जो एक पॉइंट पे जाके सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे लगते हैं। तो आपको आपका एक बजट के अंदर अगर आपके पास 5-10 ऑप्शन है, अब उन 10 ऑप्शन में से आपको जो प्ले करती है चीज, वो करती है रिव्यू या कन्वर्सेशन। तो
आई थिंक अमेजिंग यार, अमेजिंग। मैं तुम्हारा मैंने रिसेंटली पहले भी एक सोशल स्वैग NFT.social swag कवर किया था। अगर आप लोगों ने ऑडियंस नहीं देखा है तो मैं लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड मैं सोशल स्वैग दिखाना चाहता हूँ। यू रिमेम्बर अथर्व, हमने ये काम साथ में किया था, सोशल स्वैग यस वाला। यस एब्सोल्युटली। और यार ये अमेजिंग था। मतलब मुझे इसके अंदर सबसे पहले तो ना एक चीज ये जाननी है कि यार तुम रणवीर सिंह से मिले हो क्या, पहली चीज। नॉट येट। मतलब नॉट येट। मुझे मुझे ना एक्चुअली में जो चीज इंस्पायर करी वो ये कि यार अभी तुम, मैं आई कंसिडर यू टू बी न्यू इनटू दिस स्पेस, बट तुम, एब्सोल्युटली। बट जिस तरह से तुम ओजीज के साथ टाई अप कर रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। सोशल स्वैग जो था ये बेसिकली अक्षय कुमार और राणा दग्गुबाती का बैक्ड एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और उसके साथ तुमने इतना इजीली उसको कैसे कन्विंस किया? पहले तो मतलब उनको ये नहीं लगा कि यार एनएफटी लैब्स, मतलब अभी हम इनके साथ न्यू कमर्स के साथ क्यों टाई अप करें? अच्छा चलो टाई अप कर भी लिया, फिर यू यू आर यू हैव दिस रेपुटेशन ऑफ रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण और 83 मूवी। उसका तुमने एनएफटी का प्लेटफॉर्म, पूरा एनएफटी डिजाइनिंग से लेके एनएफटी की प्लेसमेंट और एनएफटी को सेल किया है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसकी रणवीर सिंह की और दीपिका पादुकोण की भी रेपुटेशन स्टेक पे थी। ऊपर से यार रिलायंस को कैसे कन्विंस किया? रिलायंस प्रोडक्शन थी इस मूवी की, तो हाउ यू वर एबल टू कन्विंस दीज गाइज? बिकॉज अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड राइट कि रेगुलेशन की क्लैरिटी नहीं है एंड ऑल दैट। बिकॉज लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हाउ यू गाइज आर नॉट ओनली बिल्डिंग a marketplace or something very unique, you are also trying to convince people and trying to educate them about a new revenue stream. And if people like Reliance Production, they understand the value of it, or people like Akshay Kumar, Rana Daggubati, those who are himself are big brands, people like Ranveer Singh and Deepika Padukone, अगर इन लोगों को NFT स्पेस में सक्सेस दिख गई, आई डोंट नो, देयर इज नो लुकिंग बैक यार। तो हाउ यू वर एबल टू कन्विंस दीज गाइज यार? So actually, Kashif, it's like a bit of a, it's a bit of a, it's not been a straight path for us also, right? Even though it's like, even though we are new, we've also had like multiple क्या बोलते हैं, detours and retours and all of this. So I think the last point where I was covering in our journey now was that we had reached Long Hash Ventures, which told us to have a differentiator in our niche. That's how we figured out we want to build It's Mine, a social marketplace. इसके बाद क्या हुआ कि the next obvious challenge which was apparent to us now was that now how do we get to the sports teams? अभी ये सब तो हो गया कि we know what we want to do, but how will a sports team get engaged? And for this, there was a phase of time where I was doing cold calling to people who worked in various sports organizations, like literally like a BPO kind of a thing. I had somehow hacked together a list of about like 280 or 380 names, and every day I would sit in my office and like make like 30-40 calls minimum, sometimes more, sometimes like 70-80. Most of these calls did not engage in anything useful, but one of I think after the initial 100 calls now, I lost count to who I was talking to वगैरह. But somebody who I had spoken to in the very early days of cold calling one day sent me a WhatsApp. Have you heard about this program? Why don't you try? It seems like a good fit for you. And the link which they had shared now was this accelerator program. So this is our third accelerator called Hype Sports Innovation. और हाइप जो है ना, इट इज अ इजराइल एंड यूके बेस्ड एक्सेलरेटर which only works with sports companies, and their entire USP and business model is around helping sports tech startups tie up with major sports brands. That is their USP. They are able to work out these partnerships. So we applied to hype, and initially I think we were rejected. We were not taken in the program. But क्या हो गया कि I kept on following up with them कि हम लोग ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, kept on like bombarding them. At some point they were like, तुम लोग let's do a re-interview kind of a thing. Maybe we want to evaluate you one more time. So I think over there our persistence paid off a bit. We went into re-evaluation, and this time we got selected into the hype program. And hype actually opened up the doors for us to get our first international sports partnerships. And now there are like a few partnerships which we'll cover a bit later, but all of those have come through hype.
But what happened is, as a result of all of this, I had also reached a gentleman called Mahesh Bhupati वाया करके, because cold calling से ये सब शुरू हुआ. So somehow by luck, I landed a Zoom call with him where I was telling him that we have just gotten into the hype program. We are signing up sports teams. We also want to sign up individual athletes. So because you are so well known in the Indian athlete community and in the international tennis community, can you yourself come as an athlete associated with us for your own NFTs? Plus, maybe bring Leander Pace and all of the other people who he knows within this fraternity. It was like a very lucky moment for us, because Mahesh then told us that guys, that is all okay, but तुम लोग छोटा छोटा सोच रहे हो. He, so basically Akshay, Rana and Mahesh, right? They jointly own Social Swag. So he told us That way I didn't knew that Mahesh Bhupati is also there in Social Swag. he's also there. So उसने क्या बोला कि we already have this company, and I see that based on whatever, basically, I gave him a pitch about the whole thing, right? What is an NFT? What is the market potential? Ye wo. And because he's a very sharp businessman, he immediately saw the opportunity in having his own network also build something of in this space. So he himself kind of put the idea out there that, are you guys open to doing something in collaboration? Whereas you guys bring the technology, we will bring the contacts, and let's build it for Bollywood. So this was like, when the opportunity came our way, many people told us, guys, don't do it. It will take your focus away from sports, वगैरह. But we had a simple funda that ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा यार, कभी नहीं मिलेगा. So ट्रस्ट मी, जब मेरी तुम्हारी पहले भी बात हुई थी ना, तो मैं ये सोचता था यार कि ये इतनी अर्ली स्टेज में इतनी मेजर पार्टनरशिप्स कैसे करी. और मेरे ये दिमाग में था कि यार, या तो तुम लोगों का बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, मतलब यू कम फ्रॉम अ वेरी एस्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, बट अभी मुझे तुमसे बात करके लग रहा है कि you guys are like normal individuals who were working for some companies, who studied from colleges, who pursued their ambitions, their passion, working for companies, and figured out, okay, now let's do something of our own. You failed, you struggled, you again failed, you did cold calling, and now after cold calling you got Mahesh Bhupati, and how you guys are trying to create something is like something phenomenal. यार, मतलब मेरे को ये वाली चीज आज इस इंटरव्यू के दौरान ही पता लगी, मुझे नहीं पता था ये पहले. एंड आई एम ग्लैड कि यू शेयर्ड दिस थिंग, बिकॉज इट्स लाइक हाउ बिग ब्रांड्स आर बिल्ट. लाइक मैंने मैंने कहता हूं ना कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं या सक्सेसफुल स्टोरीज, चाहे आप संदीप नैलवाल की स्टोरी ले लो, चाहे आप हर्ष की स्टोरी ले लो ईपीएनएस में, चाहे आप जो इस इंडस्ट्री के अंदर जितने सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे आप निश्चल शेट्टी की ले लो, यू आल्सो यूज्ड टू वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल. आप किसी की कहानी भी ले लो, तो मतलब दिस इज लाइक अमेजिंग. अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है कि रिलायंस प्रोडक्शन, हाउ यू वर एबल टू गेट 83 गाइस कन्विंस्ड कि यार लेट्स गेट इनटू एनएफटीज, बिकॉज 83, since it was based on a 1983 वर्ल्ड कप मूवमेंट, तो ये स्पेशल भी था बिकॉज दिस वाज रियली एप्ट फॉर एनएफटीज, राइट? How you were able to convince these guys, because initially they must have said नहीं यार, हम लोग को वैसे ही बहुत पैसा कमा रहे, why NFT यार, why we want to do that. Correct. So there are actually two things, right? Early on, I think the one thing which we have done, right, is that, had this partnership with Social Swag not been in place now, there was no way to land 83 on our own. Social Swag ka partnership gave us the credibility to be viewed as a company who's capable of delivering on what we are promising or pitching. And very honestly, Social Swag ka jo hai na, promoters, for example, Mahesh Bhupati and stuff, it is on his name and reputation that companies like Reliance have agreed. So had Mahesh not put us, he had put some other company in place of us, they would have still got out on the deal. But I think the one thing which we did early on and a bit differently na, is that we did not just make promises for the sake of it. We rather give them a very honest assessment कि देखो भाई, इंडिया में मार्केट बहुत नया है NFTs का. We will do it for you to the best of our ability, but please don't view this as a
monetization tool only. Rather, you should view it as a long-term community building tool and a very big PR boost. अगर पैसा बनता है तो that should be a bonus, but that should not be the core focus of building these NFT collections. And I think that one pitch which we made, right, was very different from all of our competitors who were pitching NFT opportunity on the merit of revenue. क्या है ना कि this movie itself has like a budget of over 100 crores and they were targeting revenues of multiple 100 crores. So they knew कि ये लोग कितना बना देंगे, 2 crore 3 crore, फिर भी it's like not even 2-3% of the total pool. It doesn't make sense. So we differentiated by positioning the whole NFT opportunity as a fan building, a community building exercise, more than a revenue tool. And I think that they were able to figure out that these guys are at least honest. वो लोग जो है वो बोल रहे हैं. And based on, I think that combined with Social Swag's reputation and their reach in the market, that is how the 83 producers agreed to come on board and take a chance with us. Amazing. How's been their experience like? I mean, not in terms of maybe revenue, but in terms of traction. So are they getting good traction from it? I think the traction has been lovely. We are very happy that we were able to get some good marketing support from people like yourself, Polygon. Like a lot of good people have helped us with a lot of good coverage. इसमें क्या हो गया ना कि one very good benefit that came out of it is that everybody who's involved with 83, right from stars like Ranveer and Deepika, have suddenly had a crash course in NFTs, and it's like, and now everybody is. So now even they have got a, you've given them a crash course on this. Multiple times we have like shared so much material, information, gyan, one-sided. But one-on-one. No. With the producers, and the producers team is the one which conveys ahead. Okay. So, but the benefit of all of this is that now they have all agreed to come together for one iconic drop, which is going to happen sometime this month, which we are calling the Prestige collection. जब ये launch होगा ना. In fact, I was going through the website. Website पे तुमने बोला है, I think website पे January लिखा हुआ था. Jan 2022, but थोड़ा delay हो गया. We will be updating that date now. It will be Feb. ठीक है हाँ, वो website पे तो ये इसमें क्या launch क्या होगा, ये यहाँ पे people are waiting for that. In fact, I am personally looking forward for this. So this is going to be the best thing that we have done till date out of whatever we have done. यहाँ पे क्या होने वाला है ना कि we are launching a collection of only 16 NFTs, 16. These are all phygital NFTs. मतलब क्या है कि we are giving people an NFT of a movie scene, but those who buy it na, they get shipped by courier actual cricket memorabilia, autographed from 83. And this memorabilia is like it's vintage cricket memorabilia, obviously, but it is also packaged in museum style packaging. So you can very proudly keep it in your house, in your living room, show it to all your friends, family. And if you want to resell the NFT ahead, this package will actually preserve the asset inside it. So even after many years, when the asset has gone up in value, when you want to ship it to somebody else, if you want to do a sale, that person will also get a very good condition wala NFT, and that is where the museum style packaging comes into picture. So हम लोग ये 16 NFT launch करने वाले, which are all 16 individual assets, which are giving people the movie scene plus the asset itself. यार अथर्व, मतलब it is like so exciting to know that you're not just building a product, you're also educating people, you're also educating celebrities, you're educating production houses, you're educating sports managers, you're educating sports fraternity. ये बहुत बड़ी बात है. इकोसिस्टम तभी ग्रो करेगा जब हम एजुकेट करेंगे. हम लोग भी वही करते हैं. टू बी ऑनेस्ट, हम अपने चैनल से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी एक को आपने एजुकेट कर दिया, वो एम्बेसडर हो जाता है. आज आपने दीपिका पादुकोण को या रणवीर सिंह को एनएफटीज की इंपॉर्टेंस पता लग गई और एनएफटी से ट्रैक्शन आ गया. रिलायंस अपनी सारी मूवीज, by the way, Reliance production is now, and it is going to be the world's, not just India's, the world's top producers. और उनके ब्रांड्स अगर एनएफटी स्पेस में अगर ऐसे आएंगे और उनका सोशल स्वैग एनएफटी लैब्स के साथ अगर टाई अप होता है, तो आप सोच सकते हो कि हर एक आने वाली मूवी की एनएफटी आपको एनएफटी लैब्स के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी. ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज ये है
कि ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो हमने बात करी सिर्फ बॉलीवुड की और इसकी, बिकॉज हम वापस अपने स्पोर्ट्स जो हमारा कोर है उस पे चलते हैं। और बाय द वे ये भी स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज थी। अगर हम स्पोर्ट्स पे चले तो यार अथर्व, ये तो समझ में आता है कि तुमने रिलायंस प्रोडक्शन को, दीपिका पादुकोण, रणवीर, अक्षय कुमार, राणा दग्गुपति, महेश भूपति, इन सबको तो कन्विंस कर लिया, ये समझ में आता है। ये देसी है यार, देसी लोग हैं अल्टीमेटली। ये समझ सकते हैं कि चलो अथर्व यार इंडिया से है, देसी बंदा है, चलो यार लेट्स सपोर्ट हिम फॉर एज दिस थिंग। बट यार मुझे एक बात बताओ, recently I just got to know, because since we are having a discussion, let me just share it with people. यार दिस इज क्रेजी, आई मीन ये ग्लोबल समिट हो रही है, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक ग्लोबल स्पोर्ट्स टेक समिट 2022। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स समिट हो रही है, जिसके अंदर मतलब हुज हु ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज पार्टिसिपेटिंग। और ये जो स्पोर्ट्स समिट हो रहा है, ये बेसिकली इस चीज को फिगर आउट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो प्रेजेंट हो रही हैं, मिल रही हैं, और वो एक 3D एनवायरनमेंट में मिल रही है, जहां पे वो फिगर आउट कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को कैसे एनएफटीज में लेके आए, मेटावर्स के अंदर स्पोर्ट्स कितना बड़ा होगा और कैसे खेला जाएगा, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से नए ट्रेंड्स इवॉल्व हो रहे हैं। इसके ऊपर मंथन करने के लिए आप इमेजिन करो, पूरी दुनिया से स्पोर्ट्स की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और समझना चाह रही हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर एनएफटीज का क्या रोल होगा और मेटावर्स कैसे स्पोर्ट्स को डिसरप्ट कर रहा है। एंड आप जानते हो, ये मैं ब्रांड्स दिखा रहा हूं नीचे, आप ब्रांड्स देख, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यू नेम इट एंड दैट ब्रांड इज हियर। और इसका जो एनएफटी पार्टनर है वो एनएफटी लैब्स है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये कितनी बड़ा प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए कि इतनी बड़ी ग्लोबल स्पोर्ट्स टेक समिट का जो एनएफटी पार्टनर है वो एनएफटी लैब्स है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अगर मैं आपको एक जो इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जस्ट नाम देखें, यूएफए, वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, पीडब्ल्यूसी, पेप्सिको, यूएफए, E1 सीरीज, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी, जो हमने जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो क्लब है, राइट, इजरायली प्रोफेशनल फुटबॉल लीग, मतलब आप यू नेम इट। एंड आईसीसी भी था इसके अंदर, आईसीसी भी था इसके अंदर। तो ये आईसीसी हेड ऑफ डिजिटल इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट द कितनी बड़ी समिट का एनएफटी लैब्स जो है वो इसका पार्टनर है, जिसके बारे में मैं अभी पूछूंगा। और जो यू नो हाइप्स इनोवेशन, जो ये एक्सेलरेटर है, इसके बारे में भी पूछूंगा कि ये एक्सेलरेटर प्रोग्राम में और ये इसका क्या मतलब है। मतलब इफ यू कैन जस्ट टेल मी यार, ये तो मतलब अथर्व, हाउ यू वर एबल टू गेट इनटू इट यार, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, वहां तक तो समझ में आता है रिलायंस और वहां तक, बट हाउ यू वर एबल टू गेट इनटू इट, इफ यू कैन जस्ट टेल अस मोर अबाउट इट। So actually, this is where I think this all began with cold calling, right? The data which I had na. लाइफ में हमेशा याद रखिए, कोल्ड कॉलिंग की अहमियत कभी भी कम नहीं हुई है, आज भी। और एक कोल्ड ईमेल, ये दो चीजें आपको लगता होगा कि खत्म हो गई हैं। कई बार मैं लोगों को सुनता हूं, आज के जमाने में ईमेल कौन देखता होगा, आज के जमाने में कोल्ड कॉलिंग कौन चलता है बॉस। ये पुराने जो जो तरीके हैं ये आज भी चलते हैं, और अथर्व ने करके दिखाया। So actually, cold calling से क्या हुआ ना कि most of the data which I had ना, fortunately or unfortunately, was of for foreign clubs and foreign associations and such. तो वहां पे क्या हो गया कि I think this is like a not a it wasn't very challenging for me to talk to foreign people, and I think both one on one as well as one to groups, because I was anyways in the US for five years. वहाँ पे मैंने पूरा education किया, then I was in China and stuff, right? So I had a bit of a experience over there already, but I had to then really put that experience to test for doing two things. For our own fundraising as well as for the cold calling. तो हमारा जो fundraising हुआ ना, literally there is no Indian VC on that cap table. They're all from Singapore, Hong Kong, US, Canada, and all these like Western and Southeast Asian territories. But more importantly, also had to speak to a lot of people from Israel, a lot of people from Spain, Holland, all types of countries.
तो यहाँ पे क्या होगा कि when we got into hype accelerator, I think that persistence of us for following up with them time and again actually got them to think कि ठीक है, let's give them a entry point and बाद में देख लेंगे क्या करना है. Worst case, from their point of view, they would have just probably removed us from the program had we not turned out to be a promising company. But they took a chance with us. They kind of I think this is where we have been lucky, right? Like companies like Social Swag took a chance with us. Reliance took a chance with us. And Antler took a chance. Longhash took a chance, and so did Hype. They also took a chance. And I think that chance, had it not come, it would have been a whole different story right now. But they took a chance. वहां से हमारी बातचीत शुरू हुई, and they actually, their whole expertise comes in only one area. बहुत लोग क्या होते हैं कि they start companies in sports domains, but they have no experience actually selling to sports brands. तो क्या कंपनी बन जाता है, but there is no traction उसके बाद. तो हाइप का क्या है business model? Their whole expertise and what they teach you is about how to make your solution palatable to an actual sports influencer. What will it take for you as a startup to try to close a deal with a brand which is which is worth like a few thousand crores, and most of these brands are worth that much or more. So they actually helped us tweak this whole business model, and that model, right, got one more thing into the picture, that what we had been building with ITSMYNE, which is the social marketplace. That's a very B2C side of the space. Hype told us that unless you have an end-to-end B2B solution also, you will not be able to get any sports brand to partner with you. कितना भी झगड़ लो. And that is when we had to actually develop our solution even more. Whereas now what ITSMYNE is like the consumer side of things, but we also have a whole separate business vertical which deals with getting sports brands into the metaverse and into the NFT ecosystem. This goes from educating what a NFT is, what a metaverse is, how to actually build something on it, and we support them and handhold them at every step of the journey. Right from deciding what is the design assets to be NFTs, to what should be the pricing of the NFT, usko kya karna chahiye, whether you should have a metaverse presence or not, whether it should be a trading card NFT, asset-backed NFT, utility, all of this we have waited to figure out. In this process, what happened is that we were able to do this relentlessly for many of the partners that Hype gave us introductions to. So Hype at one point saw that we are kind of going out of our way to make things happen. Matlab, I think so this might sound a bit bad, but like on average, with one sports influencer, I do about 12 to 13 email for follow-ups. Not like one or two, because nobody replies in one or two. कभी-कभी और हमारा ऐसा हो चुका है कि on the 13th follow-up somebody has given us a Zoom call, and that Zoom call then may or may not go anywhere, but at least that becomes like countless like very invaluable learning. So what happened is that Hype was well aware that we are like trying our best to make things happen, and then this whole Sportstech summit का opportunity came about. तब जाके क्या हुआ कि Hype ने एक sort of a RFP or a tender, not a tender, but like a closed competition they had kept, like an internal hackathon, wherein they told all the Hype startups. So now the thing to remember over here is that we had been picked into Hype from 400 global companies approximately. Within Hype, everybody who's our peer has also been picked from that same pool. So everybody's like a very top tier player within this space. So now we had to compete against our own peers to actually get selected as the NFT partner of this event. So यहाँ पे we had to all come up with like a unique pitch, what can we do for the event? How will that matter to the guests and so on? So यहाँ पे I think one thing which worked in our favor was that everybody gave one pitch. We gave 5 pitches. मतलब we gave them option A, B, C, D, E, not option A and B. And then they were a bit mind blown. कि यार we had not expected so much, but तुम लोग कर रहे हो, so we will go with you now. So that is how we got that partnership. Basically, like, going the extra mile for them. And now what has happened is that the partnership is such that we are the exclusive NFT partner, which means that वो जो event आपने दिखाया ना अभी screen पे, that event is going to get around 1,500 to 2,000 attendees. Out of all of these, there are 300 VIP guests, which are the names which you recited. So for these VIP guests, Hype will be giving them a personalized NFT for having attended the conference as a memento from the organizer. And that memento is being made by us.
and that will be given to all of these sports VIPs. So the benefit over here is that our brand value will shoot up insanely within the global sports community, because right from people at Meta to people at sports teams are suddenly going to be seeing NFT Labs ke NFTs floating all over their computer screens, and that is the partnership with Hype. So this is like a very big branding opportunity for us, and it also comes with us having the biggest virtual booth in that metaverse where the event is taking place, so that people can actually connect with us in real time and see how we can work with their organization. Kashif, आप म्यूट पे हो, आई थिंक. हाँ, so let me just share something. उसमें okay, so you are making basically NFTs of people who will be attending there, right? The VIP guests only. Okay, all right. So अगर मैं बात बोलूँ अथर्व के फ्यूचर में इतनी जबरदस्त सारे टाइप्स हो रहे हैं, यू नो, ग्लोबल समिट्स के साथ टाइप्स हो रहे हैं, रिलायंस प्रोडक्शन के साथ, सोशल स्वैग के साथ इतनी जबरदस्त अरेंजमेंट्स हो रही हैं, टाइप्स हो रही हैं. व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एनएफटी लैब्स? मतलब एनएफटी लैब्स के पास क्या क्या होने वाला है? मतलब मुझे लगता है कि जितनी भी स्पोर्ट्स के अंदर व्हाट डू यू वांट, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर जितनी भी जो ये फेडरेशंस हैं, जितने भी सेलेब्स हैं, और जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लाइसेंस्ड एनएफटीज होंगी, आर पीपल आर गोइंग टू फाइंड देम ऑन सोशल एनएफटी लैब्स? क्या ये होने वाला है? Yeah. So if all goes as per our plan, Social Swag NFTs will become the go-to marketplace for official Bollywood NFTs, and ITSMYNE will become the most dominant platform for all sports NFTs. ITSMYNE. So अच्छा, ITSMYNE will ITSMYNE. be a global product, whereas Social Swag NFTs is an Indian and Asian focused product, and that is only for Bollywood. ITSMYNE is for sports. अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो ITSMYNE है वो ग्लोबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म रहेगा, और nft.socialswag.com जो है वो जो इंडिया के अंदर जो जैसे बॉलीवुड रिलेटेड जितनी भी एनएफटीज है वो वहां पे आएंगी. दैट इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? That is exactly right. Because currently the vision with social swag NFTs, right, is that we are at a very early stage. So that is not going to be a social market just yet. That is going to be like just a transactional marketplace with some fan engagement around it. Whereas ITSMYNE is going to become the social marketplace, and to enable ITSMYNE to be able to onboard all of these brands at the back end, we are doing the B2B side of things, wherein we actually design the whole NFT program for various sports organizations. Because without that backend being in place now, ITSMYNE will not get the supply in place. And अगर supply नहीं होगा तो कोई demand नहीं होगा. So for the ITSMYNE platform to get established, all of these foundations are requisite. मैं ITSMYNE.club को मैंने शेयर किया है, ठीक है, ये मेरे सामने है. तो यहाँ पे जो मार्केट प्लेस है, जैसे कि मैं ये भी देख रहा हूँ, एनबीए का जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, तो यहीं पे यहाँ पे मार्केट प्लेस आएगी ITSMYNE पे. हाँ, so अगर थोड़ा ऊपर जाओगे, if you click on product, हाँ हाँ, so what we are doing is कि we are launching the app soon on Apple as well as Android App Store. And हमारा Apple का application actually comes out first, maybe within this month itself. So यहाँ पे when we actually launch now, we will be launching with NFTs of two brands who we have already partnered with from the world of sports. And these will be basically, this is the beta launch. So ये basically app application है. तो यहाँ पे क्या है कि you are seeing like a Instagram style feed, right, of various NFTs. These NFTs can be categorized by top rated, trending, and other filters. And on the second screen which you see, comments, वो जो है ना, तो similar to Reddit, थोड़ा ऊपर. हाँ, ये जो है सेकंड वाला स्क्रीन जहाँ पे लिखा है हाँ डिस्क्रिप्शन कमेंट्स. हाँ बिल्कुल. हाँ, मेरे लेफ्ट से सेकंड. तो यहाँ पे क्या होगा कि all of the social conversation by people, all the comments and stuff, everybody can upvote and downvote on each other's comment, and they can put more comments on it. And using AI at the back end, this basically enables the best content to automatically
come to the top. So exactly how Reddit works. There is a point-based algorithm at the back end. सो बेसिकली एनएफटी मार्केट प्लेस भी है और जैसे हमने बताया कि सोशल एलिमेंट भी है। आप एक यहाँ पे आप जो एनएफटीज में जो ओजीज हैं उनको जो सक्सेसफुल लोग हैं जो क्या डिस्कशन हो रही है एनएफटी फोरम में, क्या बातचीत हो रही है, क्या लाइक्स, क्या कमेंट, कौन सी एनएफटी ट्रेंड कर रही है, वो सारी आपको एक जो सोशल एंगल है। तो एनएफटी मार्केट प्लेस प्लस एक सोशल एंगल जो है, जो सोशल डिस्कशंस हो रही है उसका क्लब करके यहाँ पे दिल बी एडिंग द फीचर। Correct. And we have built this like a Web 2 product. If you don't have MetaMask, na, don't even worry about it. It's like it's as easy as signing up for Uber. You just enter your name, phone number, email. You're directly in. You can pay using your credit card, fiat money. It's a very easy to interact with mobile interface. Matlab somebody who's new to the NFT game, na, for them this will seem like a fun e-commerce type experience. It won't seem like a complicated blockchain experience at all. ये तुमने यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया हुआ यार, ये थोड़ा सा बताओ। Yes. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। So over here, na, we have actually compared ourselves to. So when we were doing our fundraise, na, this question came up by all the investors. How are you different from Gary Vee's product or NBA Top Shot? So we just thought, why don't we just make a table once and for all? So ये जो table है, यहाँ पे we have combined ITSMYNE with basically 4 other platforms. VFriends, which is by Gary Vee, where the NFT holders get access to the VCon, which is a conference which is being organized by Gary Vee. BitClout is a NFT marketplace. Not exactly an NFT marketplace, it's an NFT discussion platform. OpenSea, we all know they're like the Amazon for NFTs, and NBA Top Shot is the Amazon for NBA NFTs only. So हम लोग क्या कर रहे हैं कि the first thing which you see now, intrinsically social, that is the key differentiator. मतलब अगर आप बाकी सब भूल जाओ ना, this is the main takeaway, that social conversation by the brand with its community as well as with between the community with each other. That is the key differentiator. And यहाँ पे you might think कि this is of use to the consumers, but it is not just for the consumers. जो अपने sports brands है ना, for example, you take a football team, it is incredibly beneficial for them to also get a sense of social sentiment around their brands NFTs. So when they go and put their NFTs on, they'll also get to see कि हमारे fans हमारे NFT के बारे में क्या सोच रहे हैं. So this is very useful to them as well. Then we have this concept called a fractional ownership. This will become a feature which comes out a bit later. But यहाँ पे क्या है कि suppose कोई NFT अगर बहुत महंगा है, say NFT 10 लाख का है, then you and me can both put 5 lakhs and jointly own this NFT. If there is a majority vote to sell it, we can sell it. And if we sell it, then the proceeds of that sale will be split in the same ratio of our initial contribution. Launchpad is something that we are looking at as a phase 3 feature. यहाँ पे क्या होगा कि there are many upcoming and amateur sports teams and leagues who want to enter the NFT space, but they require some funding support initially. So यहाँ पे क्या होगा कि we'll collect money from their fans upfront, pay the brand, and then have their NFTs come and get listed. But then the community owns the IP, not the brand. Green basically क्या है कि we are doing this on a proof of stake blockchain, not on a proof of work blockchain. So it is more eco-friendly because proof of stakes consume lesser energy and so on. Fan tokens क्या है कि say if you're an athlete or you're a team itself, you can give people access to certain special parties, events, online events, offline events using specialized fan tokens. And these fan tokens will mainly get airdropped to the people who hold the NFT itself. And then it's a curated sports community. Why? Because it's a sports NFT marketplace ना. तो जिसको sports में interest नहीं है और NFT में interest नहीं, तो उसको यहाँ पे कुछ काम ही नहीं आने का. Whereas if you go to somebody like OpenSea में we have people who have all sorts of interest ranges. But over here we have the sports community specifically, which actually makes us a more valuable marketplace to be listed on from the point of view of a sports brand. And all of these are NFTs which are officially licensed. मतलब this is not fan art. ये NFT brand खुद ही बेच रहा है लोगों को through our platform. Amazing. I mean, thank you very much. I think ये बड़ा important segment था website का. I really liked it. कि you were open about it. You have tried to give a comprehensive, एक पूरा differentiation बता दिया कि OpenSea में और जितने बाकी platforms में क्या difference है. I also want to know
अथर्व के अपना you know mine there is a token as well, right? So Yeah. if you can just tell us what is the role, because ओपन सी पे हम देखते हैं कि टोकन नहीं है, या Hmm. अभी ओपन सी का अपना टोकन नहीं आया और उनका भी कुछ प्लान लग भी नहीं रहा। बट जैसे सपोज अगर एनएफटी लैब्स का टोकन है, राइट, तो टोकन की क्या जरूरत पड़ी और टोकन का पर्पस क्या है, क्या एक्चुअली में टोकन का कुछ टोकन होल्डर्स को कोई इसका फायदा होगा? Great, great. So basically, yeah, definitely. One of the, I think early on, no, when we actually were at Antarva, we had no plans to issue a token. We were going down the traditional startup route कि एक MVP बनाओ, फिर equity funding उठाओ, and then do Series A, Series B, and all of these things. But when we went to Longhash Ventures, Longhash is basically a crypto VC, right? They have seen success and failures of all types of companies in this space. They actually opened up our eyes to the whole importance of having an invested community. And the token is the best mechanism to develop this invested community. So we actually launched a token called MYNE, which is MYNE. MYNE is the native token for all of ITSMYNE. इसका क्या है कि there are actually multiple benefits to the holders of that token. The key benefit is that all the NFTs which come on our application, right, will be categorized into two categories: regular and VIP. From the sports team's point of view, they get to designate which ones are VIP and which ones are regular. So if you take some PFP type NFTs, which might be like purely collectibles, or some NFTs which have limited utility, those will go in the regular category where anybody can come. They can go to our application. They can simply purchase the NFT using their crypto wallet or their fiat instrument. But the VIP NFTs are only available for purchase to those who hold and stake MYNE tokens. That is how the community gets rewarded, because Yeah. only if you're part of the MYNE community now do you have access to the creme layer of material. वरना बाकी सब तो सबके लिए open ही है. But you can't buy the best of it unless you are a part of the MYNE community. That is one thing which we have done. Second thing which we have done is that this is a social application. यहाँ पे, Reddit actually figured out that they have this whole concept called karma. The more you show engagement on Reddit, you earn karma points. This whole thing is a mechanism to boost user engagement. We will also be giving people rewards of MYNE tokens the more that they show engagement on the platform, and those rewards then in turn make them eligible for high quality NFTs, which can get them good returns and fun. Basically, the third thing is that I mentioned in our screen earlier, key fan tokens is one thing which we are doing, and these fan tokens will not be sold largely as NFTs. They'll be purely airdropped to the people who hold the actual NFTs. यहाँ पे क्या है कि only those who hold the MYNE token and they hold the VIP NFTs ना, only they are eligible for the fan token airdrop. The other buyers don't get this. And then we are also talking to certain brands. Currently, some of these partnerships are still under discussion, right? But consider the likes of Under Armour and such. We are talking with them to engage into a partnership with us, which is very similar to how Cred does it. You have these Cred coins, and then there is some kind of a sweepstakes kind of mechanism where you play a game and you spend some coins to play the game within the app. But if you win the game, you get the partner's product free of cost. So Cred has done it in a lottery mechanism, but we are not doing it in a lottery mechanism. We're doing it in a proper play to earn mechanism. So for that play to earn to happen, MYNE token is the only instrument that gets used. And the final thing is we have this buy and burn program. यहाँ पे क्या है कि our total supply of MYNE tokens is 100 million MYNE token. It's a finite supply. Whatever revenue we make as a company, a certain percentage of it is dedicated and earmarked to buy back MYNE tokens from the market and to burn them. That will cause the supply to diminish, per token value can hopefully appreciate. Okay, that's amazing. For my audience, I'll just give them a so it's like CoinGecko. On CoinGecko, you have all the details, the contract addresses, uh, and the token ticker is MYNE. And
Then you have, if you want to know the markets where it's available, at present it's available on Pancake Swap and Bitmart, but I'm sure going forward it will be available everywhere else It as is well. also on BitBNS कश्यप यहाँ पे Yeah, नहीं दिख so रहा है CoinGecko पे, okay, but BitBNS, है. right. BitBNS is not mentioned here, but you can get it from BitBNS, and then you can get all the details as well. So from CoinGecko, MYNE, right? So Also, if you can share our CoinMarketCap का page ना, that is actually the uh, most updated. okay, let me just do that. So actually, CoinMarketCap has recently launched a program called Gravity, where they are also from their side giving exposure to tokens which they think have good potential. And MYNE is actually part of the Gravity program. So now people can follow real-time news about MYNE within the CoinMarketCap platform itself. ग्रेविटी प्रोग्राम में क्या करते हो? What do they Basically, क्या do? होता है कि once you open the page, I'll just show you. There is a whole section that is I given to just us. Yeah. it's mine. Yeah. So if you scroll to the very end of this, थोड़ा थोड़ी इतना भी थोड़ा ऊपर, हाँ ये जो है ना, all of these news articles and such. हाँ हाँ हाँ. So these get updated in real time. Otherwise, क्या होता है कि there is a moderation process for coin market cap. Now we don't have to go through the moderation process. All of our content goes over here in real time, Hmm. and that is only for Gravity program participants. Right. So you have invested in Bit Liberty as well? Yeah. So we have done a partnership, and that comes with a nominal investment also from NFT Labs. Okay. So they're also going after a very similar market. So we thought not similar, but there is a overlap. So we thought the best way to capture that overlap would be to partner up. I think here it's updated. Like, I mean, यहाँ पे BitBNS है, Bitmart है और Pancake BitBNS, Swap. correct. Bitmart is the best, is the most active for us, but even BitBNS is there for the Indian audience. Okay, got it. So that's it. I mean, thank you very much, Athar. It's almost like 1 hour 27 minutes. पता ही नहीं लगा. Generally, my interviews like they are like what 40, 45 minute, 50-minute maximum. But I enjoyed the conversation, to be very honest, No, because likewise, and thank you for giving us this platform. Actually, I had some I had this perception that its mine must have been because since they have got social swag on their side, they've got Reliance production on their side, they are the NFT partners of the one of the world's best sports tech summit that is being held. So I just had this perception that there must be a very strong group behind your back, and they must be arranging all these partnerships. But trust me, one thing that I really got inspired from you is that all what you did was conviction and cold calling. I I just can't imagine that even today, because I have been a sales guy from 2004. So I had spent my entire 15, 16 years in sales and business development. And I know the importance of sales calls. I know the importance of cold calls. But if you go today and speak to anyone about cold calling, they'll probably deny this idea. They'll say, no, 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 it's thing of a past. Now you have all those social medias. You can connect people through messengers and WhatsApps and applications. Trust me, nobody replies on your LinkedIn messengers. Nobody replies you on WhatsApp. Email, people still reply you back. And Atharv is a classic example of it. He is saying that he got best of the partnerships in the world today just through cold calling. Yeah, that's the level of conviction, that's the level of belief you need to have in you as an individual. No matter how much good funding you have got, no matter how much uh, expertise you have got, no matter how many good people you have on your side, but if you don't have the conviction, that belief, trust me, your business is not going anywhere, right? So
thoroughly. I mean, I really got inspired from this conversation. My belief in its mind has grown today. It has grown by leaps and bounds because now I know that there is a team behind this that who is not going to shy away, who is not going to run away, who is going to make it happen, and who is going to dedicate their rest of their life to only this project. I just have this belief because what you guys are doing, you could have done. You are very comfortable in your own life as well. You were working in best of companies in US. You would have stayed there. You wouldn't have struggled for maybe the basic things in life. Probably you were passed out from a very good companies, very good institutions, but still, if you are trying to build something in NFT space, trying to build something for you, for the country, for your people around you, it's an amazing thing. And I think congratulations to you, Athar. And we'll conduct a Twitter space soon, and we'll make more and more people aware about it. I think this is one of those projects like the way we have seen, companies like WazirX, companies like Polygon, companies like EPNS, InstaDapps. We have seen those early days of these startups. I think its mine is probably in that phase only, where the base is strong, team is strong, partnerships is strong, vision is strong. The only thing left today is, when they will finally come up with a full-fledged marketplace. The preparation is through. It's just that, the launch is there. And I think whenever they launch, it'll be a big moment for themselves and for us as well to witness their success. Athar, thank you very much for coming today. And any closing remarks, if you have, please, you can share that. Yeah, thank you so much for giving us this platform. I think क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं backend पे, but somehow it is very difficult for us to do both the work and the community communication at the same time. So I think platforms like this are extremely useful to get the word out to the community. And I hope that many people will watch this and actually get to understand कि backend पे क्या होता है. It's not just about what you see on Telegram updates and stuff. There is actually a lot of things that are happening. But obviously, most of these updates you cannot share in that much detail. So I think this is a very useful platform to us, and thank you so much for having me here. All the details of the Sportstech Summit, nft.socialstack.com, itsmyne.club, and all the details, relevant details, their Telegram, their Twitter handles, everything you will find in the description. And plus, because since this interview is quite long, so we'll create timestamp so that you don't have to watch if you have a lesser time, you can just pick your particular description and you can start watching that interview from that section. So we'll divide it into timestamp as well for your convenience. So with this thought, Athar, thank you very much. I'll catch you later, and then all the very best here. And I'm waiting for all those announcements. Before you go, if you can just give us a little indication of when we can expect the entire marketplace to be live on itsmyne.club. Within February itself, the iOS app is getting released. Android might be end of March, maybe even April actually, but the iOS app is going out first. That's amazing. That's amazing. I think that'll be a great moment to see that that NFT marketplace going live. It'll be a great moment. Yes, absolutely. Thank you very much, Athar. Milte hain phir. Great. Thank you. I thoroughly enjoyed it. Thank you. Thank you. Me too. Thank you so much.